Acting is my favorite because super meditative and I can play different characters. I think मेरा ये चल रहा है कि मैंने ज़्यादा ही बोल दिया उनको थोड़ा कि मुझे सब करना है और अब वो बोल रहे हैं कि सब अच्छे से करो और मेरी यहाँ पे जान जा रही है. More than creative satisfaction if you really put your 200% because I'm a hard worker. शायद मेरी शादी ना हो, शायद मैं अकेले ही रह जाऊँ. I don't want it to be negative. बंदों को 2 साल में मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए. लड़कियाँ they have to work harder. तो क्रिटिसिज्म या ट्रोल्स कभी हुआ है, कभी फील कोई बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं तो बोलते रहे. Hello everyone, you're watching us on NDTV Who's That 360 and we have Sumukhi Suresh in the house. So Sumukhi, thank you for joining us. Thank you, Siddhi. Thank you for having me. Thank you. And Sumukhi is a content creator, she is a comic artist and she's a writer and she's an actor too. Yeah. Very talented. और trying everything. जो हर जगह पे अपना you know you just dip your fingers and you leave and you're like कहीं तो कुछ काम आ जाएगा. So let's start. सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड योर कंटेंट जर्नी स्टार्ट? मैं ना एक फूड लैब में काम कर रही थी बैंगलोर में. इट्स अ सर्टिफिकेशन लैब जहाँ पर मैं सेल्स का काम कर रही थी. एंड साइड में आई थॉट ओके मे बी आई स्टार्ट डूइंग थिएटर अगेन क्योंकि मैं चेन्नई यू नो कॉलेज में जब थिएटर करते हैं एंड देन तब से मुझे लगता है कि मैं शायद स्टेज के लिए बनी हूँ. एंड तब एक इम्प्रोव शो था द इम्प्रोव बैंगलोर का वेयर दे वर लुकिंग फॉर आर्टिस्ट्स टू जॉइन. मुझे लगा एक प्ले है तो मैं ऑडिशन के लिए गई और मुझे पता चला और यू नो प्ले के ऑडिशन के लिए आपको लाइंस देते हैं ना कि प्लीज़ आप यू नो ये कैरेक्टर ये वो. मुझे सिर्फ वर्ड दिया गया और बोला कि आपको एक सीन क्रिएट करना है और मैं सोची थी वाह अभी थिएटर वाले इतने लेजी हो गए अब अपना सीन भी नहीं लिख रहे हैं. तो फिर मैंने ऐसे बहुत सारे 3-4 सीन्स किए. फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि अच्छा दिस इज अ कॉमेडी शो वेयर द ऑडियंस गिव्स यू अ वर्ड एंड यू मेक अ होल सीन. सो आई स्टार्टेड विथ इम्प्रोव. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग एवर. और तब मैं जॉब भी कर रही थी और इम्प्रोव भी कर रही थी. फिर इवेंचुअली जैसे जैसे लोगों से मिलने लगी लाइक केनी वाज पार्ट ऑफ द इम्प्रोव एंड आई मेट नवीन रिचर्ड हु इज आल्सो समवन आई हैव कोलैबोरेटेड विद. तो उन सब ने कहा कि तुम्हें स्टैंड अप ट्राई करना है तो मैंने स्टैंड अप ट्राई किया. फिर मैंने स्केच कॉमेडी ट्राई की. ये सब करते रहे जॉब के साथ. फिर पैसे आने लगे थोड़े से. फिर मेरा जो लालच है वो बढ़ गया और फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया. फिर मैं मुंबई आई और फिर मुझे पता चला जो पैसे मेरे पास हैं दे नॉट इनफ फॉर मुंबई बिकॉज आई डोंट थिंक एनी मनी इज इनफ फॉर मुंबई. सो व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे? 2017, 16-17 types. Okay. Yeah, that's when I properly shifted. Wow. So first ever thing that I did was improv. And the first ever thing that really made a difference for me was the show Pushpavalli, which is on Amazon Prime. Right. Which I wrote because मुझे act करना था. और तब मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिक्स होता है कि कौन लीड बन सकता है, कौन साइड कैरेक्टर बन सकता है. ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं. मैं बिल्कुल अपने हैप्पी गो लकी एटीट्यूड के साथ आ गई बॉम्बे कि मैं तो एक्टर बनूंगी, मैं लीड बनूंगी. फिर मुझे आरामनगर पता चला एंड देन आई वाज लाइक ओके इट्स अ स्ट्रगल. सो आई रोट माय ओन शो विद अदर राइटर्स एंड दैट्स हाउ इट वेंट. सो व्हेन यू आर राइटिंग व्हाट इज द क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? कहाँ से आइडियाज आते हैं स्केचेस के लिए या अपने कॉमिक एक्ट्स के लिए? हाउ डू यू गेट योर इंस्पिरेशन? डिपेंड्स ऑन व्हिच वन. जैसे अगर आप स्टैंड अप बोल रहे हैं, स्टैंड अप इज फॉर मी हाउ आई राइट स्टैंड अप इज मैं पहले स्टैंड अप को परफॉर्म करती हूँ. मैं स्टेज पे जाती हूँ, मैं ओपन माइक्स करती हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट प्रेमिसेस लाइक अगर मेरे पास कोई थॉट है आई एम लाइक ओ ये इंटरेस्टिंग है, ये आज इसके बारे में बात करके देखते हैं. तो मैं इसके बारे में बात करती हूँ, आई रिकॉर्ड इट एंड देन आई राइट इट इनटू अ प्रॉपर स्टैंड अप सेट. इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अ शो और राइटिंग अ मूवी व्हिच आई डू रेगुलरली नाउ, आई थिंक आई एम मोर डिसिप्लिन्ड देयर कि वहाँ पे कहानी सही होनी चाहिए, कैरेक्टर सही होने चाहिए. And I love dialogue writing. In fact, I've just written a dialogues for a movie called Control, which is Vikramaditya Motwani's direction and Ananya Pandey's in it. Wow. So I've written dialogues for that movie, and dialogues is my most fun. Because dialogues mein the whole you can thing, play a lot. And also I love playing characters. So in the script I try different voices so that you know it looks as good. आप of course आपको सोचना है. बट ज़्यादा सोचेंगे तो वो उतना इंस्टिंक्टिवली या फिर उतना फन नहीं लगेगा मेरे लिए. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट बिकॉज आई हैव 1 minute टू इम्प्रेस यू. तो मैं वो 1 minute का सेटअप करके ये करके नहीं कर सकती. मुझे इमीडिएटली आपको इम्प्रेस करना है. बट इन अ मूवी अगेन यू फाइंड अ लिटिल मोर टाइम. सीरीज यू फाइंड अ लिटिल मोर टाइम.
Movies, I think dialogue writing, like you were saying, Yeah. is more in depth. Yeah, screenplay and dialogues is like dialogue is more fun. क्योंकि screenplay और story का जो भार है वो अविनाश और like Mr. Motwani ने किया है. So between the three, what do you like the most? Screenplay, dialogue writing, sketches, and stand-up. Oh God, it's like asking which of my children is best. You know, I stand-up is more. Or what is it that comes more naturally to you? I don't want to sound like what I sound. Actually, okay, dialogue writing and stand-up comes very naturally to me. Screenplay and story is because it's like studying for an exam. जब आप पढ़ाई करते हो exam के लिए ऐसे Research. हाँ ऐसे नहीं जाते हो ना कि अरे हो जाएगा. But with dialogue and stand-up, there is a instinct and a gut that I love about it, like which I think is good about me. And screenplay and story, I'm more thorough with it. So since I'm a 70% student, you know, जो class topper भी नहीं थी और 50% भी नहीं थी, तो मैं और ज़्यादा hard work करती हूँ उसमें. The best part although is acting. Acting is my favorite because it's super meditative and I can play different characters. So social media and content creation, how do you take out time for that? Because इतना कुछ चल रहा है now that you're telling us, she's writing dialogues, she's indulged in stand-up comics. So कैसे निकालते हो time? सीधी निकालना पड़ेगा because I'll tell you all the things I'm telling you. They're not a sure shot way to fame. Right. Like writing and the concept of writing, of course, it's very intelligent. Or आप the industry people or the directors and producers will be very impressed by writers. But audience को कोई writer बहुत पसंद है ये बहुत आराम से नहीं होता है. Like सलीम जावेद is exactly like and वो 70s में थे सोचिए. तो अब अनुराग कश्यप की writing सबको पसंद है. So you really need to build an entire image for you to be like अच्छा मेरी writing भी आप देख लो. So for that, if I have to do sketches, making an Instagram, which actually is very fun. So the whole idea is to take some like half an hour out. So talking about your team, you know, you are managing so many things. So how does your team support you in this? The best thing is they really want me to do everything. I'm so glad. क्योंकि कोई बोल दे आपको कि इतनी सारी चीजें मत करो, एक ही चीज करो, एक ही चीज में अच्छा करो. But they are very like सब करो. In fact, I think मेरा ये चल रहा है कि मैंने ज़्यादा ही बोल दिया उनको थोड़ा कि मुझे सब करना है और अब वो बोल रहे हैं कि सब अच्छे से करो और मेरी यहाँ पे जान जा रही है. But this is a good problem to have. And I'm very glad that problem of plenty. Yeah, and I'm very glad they're genuinely trying to highlight all the aspects rather than just putting me in one box. And I think that you really need a good mentor. Yeah, you need a good mentor. You need good support, and you need someone to think for you. Yeah. And now, after a long time, I'm just doing the creative part of it rather than the admin or the putting together, the packaging of it. Now I'm just doing what I want to do. Okay. So if I have to ask you, जो आप इतना creative काम कर रहे हो, इसके अंदर what is it that you are gives you the most happiness? Money, fame, या creative satisfaction? Creative satisfaction. Because creative satisfaction, if you have, और अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो, I think for till now, more than creative satisfaction, if you really put your 200%, because I'm a hard worker, I have never thought I'm talented. I'm sure मैं अच्छा करती हूँ, जो भी करती हूँ, but वो काम से ज़्यादा मेरा टैलेंट, मेरी टैलेंट से ज़्यादा मेरा हार्ड वर्क और मेरा वर्क एथिक काम कर गया. And maybe you know when you are hard working, like which you are, fame and money and everything, all these factors just flow in. The fame and money also sticks. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत जल्दी कुछ कर गई तो वो टिकेगा नहीं. तो I genuinely think the path I'm in, I'm going to be relevant hopefully till the time I die. Like I'll be doing something or the other in the multiple things I want to do. So and I think creative how satisfaction. important is luck in this whole business of showbiz? मेरा लक तो बहुत खराब है दोस्त. ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत काम करती हूँ. मैं you know होता है ना कि आप लॉटरी की टिकट खरीदते हो. कुछ लोगों की लक अच्छी है लॉटरी में, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि मैं 10 में डाल देती हूँ, कहीं ना कहीं तो मेरा कुछ ना कुछ नंबर निकल जाए. ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ because you know it's very easy for people to say, oh she got on a Karan Johar show, oh she got this movie, oh she got there. So people say, oh she is lucky, but people don't realize the hard work that goes behind it. They don't. But it's understandable, ना, because they just see the happening of it, and they're like इतनी आसानी से हो गया. I'm like नहीं, इससे पहले क्या. But it's okay, वो नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं. अगर लोगों को लग रहा है मैं लकी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे पता है कि मेरा लक काफी बदतमीज है, वो नहीं इतना साथ देता मेरा. Right.
Okay, so coming to the kind of writing that you're doing, so sometimes you also talk about, you know, topics that are related to gender specific topics or even like social justice related topics. Yeah. तो उनको आप कैसे tackle करते हो कि थोड़ा सा sensitive रहें and you know you don't go overboard with your writing process? You know, it depends. For example, stand-up. My stand-up show is called Hormonal, Yeah. which is a very honest tale about someone who's in her 30s who has hormone imbalance, which actually not even 30s, 25 से शुरू हो गया आजकल. And also, अब the whole concept of dating and meeting people, ये तो अब इतना easy दिखा रहे हैं, but when I was growing up, it wasn't that easy. You were very conservative. Most girls are raised in a very conservative background. और हम जितना भी कर लें, inside there's a guilt of like, पर शादी के पहले ये सब चीजें निकल ही आती है. So I want to talk about that, and also honestly the decisions I have made now. मैं चाहती हूँ कि मेरा करियर बढ़े, मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे बनाऊँ. ये सब चीज़ों की वजह से शायद मेरी शादी ना हो, शायद मैं अकेले ही रह जाऊँ. I don't want it to be negative. But me being alone, why is it bad? I've really invested in myself. True. And I understand it's so difficult for girls to accept that, क्योंकि हमें बताया गया है. We've been born and brought up. Yeah, you've been given the conditioning of कि कोई ना कोई पकड़ ले. Yeah. Which is fine. See, I would rather look for a partner without the tension of कि मैं अकेले मर जाऊंगी, because I think मुझे अच्छा partner मिल जाएगा, rather than going कि अरे जल्दी खत्म कर दो, तो फिर पता नहीं उस मुसीबत के साथ मुझे पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा. But now I think with time women are, you know, they're just letting go of that feeling कि नहीं भी मिलेगा तो I mean they have that feeling of independence. Yes, I just want to make sure, at least from my conversation, that it doesn't feel like passive aggressive, or it doesn't feel like Feminist, I guess ये मेरी किस्मत है, मेरी अच्छी किस्मत है कि मैंने इतना काम किया है और मैं अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी बताऊंगी. Is a great thought to be. And the reason I brought it up is because I don't wish to give a lesson. I just want to say what I'm feeling. Yeah. And I have always maintained that in all my writing कि जो जैसा है वैसे ही कहो. जो ऑडियंस है वो समझ जाएगी या वो अपना ओपिनियन बना लेगी. शायद लोग मेरे कॉन्वर्सेशन से they'll be like, I don't understand, ये तक ही रो रही है. That's also a thought. That's also their opinion. And some might just make something out of it. So I've maintained this throughout with all my writing also, that I will never take a side in the... I have taken a stand, but I will tell you exactly what I'm feeling. Now you take a stand. Which, rather than having social justice, can I have a conversation that leads to justice would be great. So you're not enforcing your opinion like on other people. I'm just saying ये मेरा कहना है, तुम्हें क्या लग रहा है guys? And you know, it's one of those... Leaving it open-ended. It's a dinner conversation ना. Dinner में आप पूछते हैं एक दूसरे से कि तुझे क्या लगता है अकेले मरना? And someone will be like, नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है. Someone will be like, नहीं तू शादी कर ले. I'm just taking it as a topic. So you'd rather have a discussion than forcing your thought. Because I think that's a more fruitful thought. Like even with shows or movies, the stand that I take, like Pushpavalli was about a stalker. I of course made sure that she looked like a villain, because she cannot look like a good person. But I never made the audience think कि आप लोग ये ना villain है. मैंने उसको villain की तरह ही दिखाया. मैंने hero को hero की तरह दिखाया. पर आपको जो सोचना है आप सोचो. It's better to do that, I think. So my next question, what comedians or what writers, you know, are the ones that who have influenced you? Okay, writers wise, there's a writer called Crazy Mohan, who is a Tamil writer. He's a Tamil comedy writer. Siddhi, his works are excellent. Like हर एक second पे joke है और उनकी story भी आगे बढ़ती है. Like he's written some of the classics. That's called Michael Madan Kamarajan or like Panchatantiram. Like a lot of Kamal Hassan comedies have been written by Crazy Mohan. Superb writer. And I really wish if I could just write like him, it would be so good. I'm heavily influenced by him. I'm heavily influenced by the way there's a narrator called Cho Rangaswamy. He's again a Tamilian, and very political satire, and his writing of politics is superb. एक dialogue बोल दो तमिल में. Tamiल में Crazy Mohan का dialogue. You know, there's a movie called Michael Madan Kamarajan जिसके मैंने बोला, and उसमें कमल हसन 4 भाई हैं, ठीक है. तो उसमें एक भाई को ट्रेन किया गया है कि वो किसी और की तरह दिखे, एंड ही वॉक्स अराउंड द एंटायर मूवी गोइंग बीम बॉय अंदर लॉकर लड़कर पतलक्षण. इट्स जस्ट वन लाइन दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट इज हाउ कूल इज दैट कि ऐसे लिखा है. सो दी एंड एज अ कॉमेडी एक्टर आई रियली लुक अप टू, देयर इज अ
actor called Manorama. I'm very South influenced, clearly. Yes. Manorama, again, she is so diverse in comedy, but her emotion acting is also so beautiful. Gotta be like Manorama. You're irreplaceable if you're Manorama. क्योंकि it's like Mahmood ना, उन्हें अगर आप डालो scene में, Yeah. तो It just elevates. yeah, exactly. Mahmood. So and if I can be that, that would be beautiful. So these Indian artists, I mean, foreign मुझे इतने That's okay. Yeah, Amy Poehler, Tina Fey, sure, okay, yeah, Julia Louis-Dreyfus, yeah. But Indian influence has been more for me. More for yeah. you. Okay, so in your line of work, do you feel there is certain kind of a glass ceiling or any kind of, or it's like male dominant industry when it comes to stand-up comics, Yeah. or maybe like writing also Yeah. for that matter? वो तो है ही. I think किस इंडस्ट्री में ग्लास सीलिंग, हर इंडस्ट्री में ग्लास सीलिंग है. But I'm looking at. But does that hamper your work in any way, or? You know, more than hamper, and I think I'm sure you'll relate to it also, is that आपको एक चीज अगर बंदों को 2 साल में मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए, लड़कियां they have to work harder. You have to work 4 years. I feel they have to keep proving themselves time again. Exactly. It's because, you know, I rather than the industry itself, I'm specifically now talking about stand-up. It's also the audience, right? Mera, in fact, the biggest challenge for me was to have a community of people who love to watch a female stand-up comedian. Because also आप online भी देखेंगे female stand-up comedians के बारे में conversation यही है कि हंसना था क्या, ये वो. It's also because people go like, इससे तो मैं ही funny हूँ. ठीक है, अब मैं मना नहीं कर रही, आप कर लो open mic. इनफैक्ट लड़कों को तो और भी ऑडियंस मिल जाती है, लड़के कहीं भी शुरू हो जाएंगे तो मिल जाएंगे. बट इट्स टेकन मी अ लॉन्गर टाइम फॉर द ऑडियंस टू कम टू मी. सो मोर देन ब्लेमिंग और टॉकिंग अबाउट द पीपल अराउंड मी हु आर ओके, आई रादर अपील द ऑडियंस टू बी लाइक, आ जाओ, हम लोग फनी हैं, हम लोग बहुत मजेदार हैं ऑन स्टेज. एंड इफ आई वे नॉट योर कप ऑफ टी, यू कैन चेक आउट अनदर कॉमेडियन. बट वो जो इनहेरेंट बायस है ना फीमेल कॉमिक का, वो है, वो ऑडियंस में है. एंड इवन विद इन राइटर्स और पीपल हु हायर writers or comedians, that's also there, because you immediately, like for example sports के लिए, very recently I heard this, that कोई sports का एक writing का काम था, and immediately मेरी बात I think छेड़ी गई, and they're like नहीं वो नहीं, उसे थोड़ा ना पता होगा क्रिकेट के बारे में. हम लोग तो पूछ तो लो ना, मेरे 2 बड़े भाई हैं और मेरे 2 बड़े भाइयों ने मेरे अंदर डाल के रखा है कि क्रिकेट तो देखना ही पड़ेगा, तो मुझे ना भी पसंद हो. बेसिकली वो प्री कंसीव नोशंस है, इसको पता ही नहीं होगा. एग्जैक्टली. सो you, how much will you fight every day? Na? So that's of course there, but Siddhi, I'm okay with taking a long time and building my own community, which is why I built Motormouth, which is my writing company, which is purely for writing flawed female fabulous or funny female fabulous. Oh wow. Like औरतों को वो responsive. And it's a company for writers? It's basically I do different writers room and we develop shows and movies. Wow. And the idea is to do female protagonists and also to keep it fun. Like when you Fun, see relevant, and when you see Farah Khan movies, you enjoy it so much. Yes. And I would do that also, and I would also do an Astitva, like a movie like that Tabu did. So there's of course, just because there's a woman writing it doesn't mean it can't be fun. It can be fun, but it can also be interesting. And so when you are writing, तो ये वाला thought आता है कभी बीच में कि मैं इस notion को change करूँगी with time. I want to bring about this change through my writing. I want to 100% that I do. I try and make, because the response, you see this, आप जितने भी कहानियों में देखोगे, वो औरतों पे भार आता है कि औरतें बताएं क्या सही है, क्या गलत है. हमारे पास काम नहीं है क्या? और हम लोग एक टाइम पे लड़कियां 10-10 चीजें सोच रही हैं कि ये करना है, वो करना है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फिर बैंगन का भरता बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला. एवरीथिंग इज रनिंग इन आवर माइंड. इसके बीच में बताओ भी क्या सही है क्या गलत. अरे तुम कुछ कर लो. So I really want to take that responsibility away from women of right and wrong. And I'm like, तुम्हें जो करना है करो. तुम villain हो, तुम villain हो. But I want to say something here. Women also want to take it upon themselves. Yes, हम ही हैं जो सारा करेंगे पूरा. But अभी अगर कंटेंट ही वैसे दिखाएंगे हम औरतों को कि औरतें घर की वो होती हैं, लक्ष्मी होती है या वो होती है जो बताएंगी आपको क्या करने के लिए. मैं नहीं कह रही गलत है वो, मैं कह रही हूँ थोड़ा बकचोदी का भी टाइम आ जाए. Share the workload. Yeah, like what if some girls don't want to? What if some girls are just like मुझे फन करना है, मुझे जोक्स करना है. True. वो भी रह जाए, no problem. Okay, so obviously it's also a very controversial line of work that you have picked. तो criticism या trolls कभी हुआ है, कभी feel कोई बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं तो बोलते रहे. इसमें ही बोल देंगे.
कि इसे क्यों बुलाया है, इसे बुलाना चाहिए था, बोल दो यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हें करना है तुम कर लो. You know, it also comes from being a big girl, because I've always been a big girl. तो स्कूल में तो छोड़ते ही नहीं है, लड़के या लड़कियां दोनों नहीं छोड़ते कि मोटी लड़की दिख गई तो शुरू हो जाएगा. तो मैंने तब से ही सीख लिया है कि इट्स ओके, तुम्हारा ट्रोलिंग मेरे बारे में नहीं है, तुम्हारा ट्रोलिंग अपने बारे में है. तुम जहाँ से बात कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है और तुम वो मुझ पे डालना चाहते हो, हैप्पी टू टेक दैट एज लॉन्ग एज यू बाय माई टिकट. अगर तुम मुझे ट्रोल करना चाहते हो, ग्रेट, पर तो प्लीज ये मेरा टिकट भेज दोगे, फिर मैं पैसे बना लूंगी. No, and I think that's a very good thought, because being on social media, it can get very overwhelming, you know, and some people cannot handle it. या ना हेट इज रेंज देखो ना, लाइक अगर आप या तो आपको आपके लुक्स के लिए शेम कर रहे हैं, या फिर आपके थॉट्स के लिए शेम कर रहे हैं, या फिर अगर आप फनी हो तो शेम कर रहे हैं, अब नहीं फनी हो तो शेम कर रहे हैं, फिर कपड़े कम पहनो तो शेम कर रहे हैं, कपड़े ज्यादा पहनो शेम कर रहे हैं. Basically, it's their problem. हाँ, तो हमने अभी जाए तो कहाँ जाए इंसान, तो might as well just do whatever. और वो ट्रोलिंग की वजह से अगर मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाए और ब्रांड्स मेरे साथ काम करना चाहें, तो मेरा प्लीज रीच आउट ऑन sumukhi@dca.co. Okay, so any favorite or maybe like a most memorable collaboration जो आपने अभी तक करी है? My movie Control, Yeah. Vikramaditya Motwani's. Siddhi, can I tell you? I remember very clearly. I watched Udaan, and at that time I had nothing to do with the film industry. I was in a lab, or I think I was working as a chef at that time, and I was like, wow, it'll be so fun to work with him, which is so bizarre, right? आप उस industry की हो भी नहीं और आप सोच रहे हो. And I remember in 2018, IREL Awards, which was happening, and I was very happy because Pushpawali won 2 awards, and हमारी गैंग बहुत खुश थी. And Sacred Games had also won, and Vikramaditya Motwani, he was there at the award function. And I remember, like, I want to go introduce myself, and I introduced myself and saying, my name is Sumukhi, and in the next 5 years, I will work with you. I will genuinely make sure I'll work with you. And he was very like, cool. And I worked with him well before 2018. 2021, I got this project. Wow. And to write dialogues for a Motwani movie is a big deal. I cannot believe it's happening. Like, that's how much I wanted this collaboration. Manifestation done right. Yeah, actually I feel like more than manifestation, I really made it happen. No, because you deserve it also. More than that, मैं 2018 में ये क्या, मैं बीच की बात आपको नहीं बता रही, क्योंकि मैंने बीच में Instagram पे एक पोस्ट डाला था जब मैंने जानबूझ के एक AMA किया था कि what about writing do you want to know? And then they were like, who do you want to collaborate with? And I tagged him. And then he was like, so sweet, thank you. And I was like, मैंने ये लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैंने भी बातें की. फिर मैंने उन्हें कहाँ कहीं तो पकड़ा किसी और पार्टी में, या मैंने किसी और पार्टी में पकड़ा. और मैं अकेली भी नहीं हूँ, मेरी एक को राइटर, माय बेस्ट फ्रेंड सुमेरा, she caught him and she saw him and she was like, जा बात कर. और मैंने उन्हें पकड़ा, एक बाथरूम के बाहर पकड़ा कि hi, how are you? And he's like, अरे हाँ, let's catch up, let's definitely meet. तो उन्हें नहीं पता कि हमारी It was all a planned हमारी पूरी mini गैंग budget. ने ये बहुत मुश्किल से बनाया है कि भाई प्लीज मैं काम दे दूं. So when that call came, and it's not even a comedy by the way, it's a thriller. It's insane. It's such a good thing for me, and I'm so glad. I'm very excited. But it's so great, yeah. You exploring different genres also. Yeah. So it's amazing. Yeah, and also writing with him, because I also started so randomly ना writing. मैंने लिखा कि मुझे acting करनी थी, तो मेरे पास एक structured किसी ने सिखाया नहीं था मुझे. So to work with him is almost like a school of writing also, कि अच्छा screenplay में ऐसे टाइट रखना चाहिए, अच्छा story ऐसी होनी चाहिए. So it was also superb that way. Okay, so you know, Sumukhi, tell us about your upcoming project with Bhumi and the legendary Zeenat Aman. I have acted in a show called The Royals, जो Netflix पे आने वाली है, and I have acted alongside Bhumi, and my role, you know, as close to, it's first of all a very fun role. Pritish Nandi was very kind to rope me in. मेरी पहले जब मैं ऑडिशंस के लिए गई थी अपनी पंचमी गाबरी के पास, मेरा बहुत छोटा रोल था और मैंने ऑडिशन दिया एंड दे वर लाइक, अच्छा ठीक है छोटा रोल है, नो प्रॉब्लम. मैं सेड हाँ डन. बातें चल रही थी, जैसे तुम थोड़ा लंबा करोगी, डन. फिर मेरी भूमि से बात हुई जब मैं उनके साथ रिहर्सल के लिए गई. शी सेड लिसन, लेट्स यूज हर एज मच, एंड देन इट बिकेम लाइक अ प्रॉपर 30-day schedule. And also a lot, they give me the writers. I'm so glad to the writers of the show because they were like, Sumukhi wants to improv, वो कर लें अगर उन्हें lines करना. Because you know the advantage of writers like that, जो आपको एक character देते हैं कि आप इनमें से आप please improv कर लो. It's very kind of them. It's very so much trust कि तुम्हें जो करना है तुम करो. You are so lucky. I'm very lucky because I had a great time. And also मैंने जीनत जी से बात ही नहीं की. आप लोगों के पास guts है, मेरे पास नहीं है. मैं उनके आस-पास मक्खी की तरह मंडरा रही थी बस.
bounced back and you know Yeah. taken the social media by storm. It's amazing. And she's great. Like there have been scenes with her and Sakshi Tanwar that have been legendary. Ek to Sakshi Tanwar, I don't know how she's not done more comedies because she's Acha? so funny. Her comic timing is superb. So her and Zeenat Aman together, it's like a treat for comedy writers or comedians or comedy actors to be like, this rhythm is so good. But you were saying you didn't talk to her, why? I don't talk to her. I don't have guts. Please, would you talk to Zeenat Aman? I'm like, hi Zeenat ji. I don't think so. मैं बस मधुमक्खी की तरह मंडराई थी आसपास कि मुझे बस देख लें ताकि बाहर दे लाइक हाय हाउ आर यू बस या फिर उनके सामने मैं सीन बहुत अच्छा कर लेती थी ताकि उन्हें लगे वाओ कितनी टैलेंटेड है Hey. बस अब जीनत जी तक ये आई एम श्योर बट बात पहुंच जाए तो Yeah, I'm sure. So, thank you so much for talking, Sumukhi. Thank It's been a pleasure. You speak so well Thank you, and Siddhi. amazing conversation. Thank so you Siddhi, so thank you much. so much.